questions which will enable you to understand that there should not be any fear of maths. And definitely the fear of maths will go away by looking at the today's session. So before we start, I request everyone to please mark your presence. Be quick, mark your presence. Okay, so let's start. Nimish and Imtiaz, that answer key is out, but what they have done is they have just shown the answers that you have marked in the paper. Still, they have not given their own answer key. So we will disclose it to you. I request each and every student to be on Gradeup official Telegram group, right? So that the moment it comes in, you will be informed about the same, right? So today we are going to talk about certain questions which came in CAT in previous years, which will enable me, like each one of us, to think that why CAT is so easy, right? So let's start with the class. So very important announcement that Gradeup has introduced installment payment scheme for all the students. Now the 12-month fees can be paid in 3 installments, and the 18-month plan fee can be paid in 4 installments. So I request each and every student to please share it with all your friends. If anyone still want to pay entire fee in one go, that option is still there. All right. So let's talk about certain questions which came in various exams. Yes, Nimish, we will disclose it. Just be patient at this point in time, because there are certain things which are not under our control also, because they have to declare it. The moment they will do, we will share it with you, right? Yes, Gaurav, that's what I am talking about. Z 2021 answer key is still not out, right? So we have to wait, because that is the official announcement. They have just shared a response sheet wherein the options which were marked by the students are shared. They still have not disclosed their answer key. So let's wait. Yes, Gaurav, we have to wait. We have to wait. Right. So let's start. So good evening, Arijit. Good evening. Good evening. So I am keeping into consideration all previous year questions, right? So not last year only. So I am just taking easy questions which enable us to think why and how the CAT paper is very easy. So let's talk about if you are given 5 digits 1, 2, 3, 4, and 5. And if I ask you, you have to use all the 5 digits and you have to form a 5 digit number A, B, C, D, E such that the number is largest possible. So I know each one of you will be very quick in giving me your answer, that it should be arranged in decreasing order. So answer comes out to be 5, 4, 3, 2, 1, right? Now, based on the same, if I ask you, they are the 5 digits that you have to use. Now, using all the digits, you have to select a single digit and a 4 digit number such that their product is maximum possible. Now, in order to answer this question, because I am asking you this question for next question, which in actual came in CAT, right? So we need to develop the basic understanding of how to get largest possible product.
In order to get largest possible product, what we did here, the leftmost position should be occupied by the largest digit, next by the second largest, next by the third largest, and so on. All right. Again, if we want this product to be maximum, so this number is starting with A and this number is starting with B. So A and B must occupy the largest possible values. So they can be A is 5, B is 4, or it can be A is 4 and B is 5. So once we have taken 4 and 5 in place of A and B, the remaining 3, 2 and 1 can be arranged in only and only one order. Now we need to think of out of these two, which product will be larger. One way of doing this will be that you multiply the two numbers or you just observe the two numbers. At this position, 5 into 4 or 4 into 5 is 20 in both cases. But when this 4 is getting multiplied by 321, your answer will be 1284. But when 5 is getting multiplied by 321, answer comes out to be 1605. So the first calculation, first product will yield larger value as compared to second. So it is ruled out. Answer comes out to be 5 into 4321. The question becomes even more interesting when you are given that you have to form a 2-digit number and a 3-digit number such that the product is largest possible. So in this case, we can answer it very quickly. सीधा दिखता है एक ही possibility. In this case, you can write down the possibilities. Now, in this case, if I start writing down all the possibilities and start multiplying them, it will take a lot of time. Now we need to understand the concept how to form largest product of these 2 and 3-digit numbers. Now for very sure, A and C will occupy the largest two places. One would be 5, other would be 4. I do not know which one is 5, which one is 4, so I'm just writing it here. So focus is to frame a 2-digit and a 3-digit number. Now I have to place 3, which will be either coming with 5 or coming with 4. If I put 3 with 5, that get multiplied with 4 and results in 12. If I put 3 with 4, that gets multiplied with 5 and results in 15. So product will be larger when I am placing 3 next to 4 and not next to 5. Now comes in 2. Either we have to put 2 here with 43 or 2 here with 5. If I put 2 with 43, 2 when multiplied with 5 results in 10. But when you put 2 with 5, it when multiplied with 43 results in 86. So 2 must be placed with 5. Now we have to put 1. It will either come with 52 or with 43. So if I place 1 here with 52, 43 into 1 will be 43. But when you place 1 here, 52 into 1 will be 52, which is a larger value. So in this case, the two numbers comes out to be 52 and 431, and by multiplying them, we can answer the given question. So guys, please check out the concept. I will take one more example on the same. पुनीत अब वही अभी बात कर रहे थे that official answer key is still not out. All right. So we are also waiting eagerly for the same. The moment it is out, we will share it with you. So Jay, when it comes to dates of any exam, right, we just cannot disclose it because there are certain things which are not under our control. So just wait for the dates. All right. So tell me first of all, this concept is clear to each and every student. Sujay, Puneet, Arijit, Nimish, Imtiaz, Gaurav, is it done? And all other students who are attending the class, I hope it is clear to each and every student. If any student has any doubt, do let me know. Be quick with the response.
Okay, so let's move on. So likewise, instead of good evening, Akhil, good evening. So likewise, if we come across, let's say 6 digits instead of 5, if there are 6 digits, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and we are asked to form two 3-digit numbers such that their product is maximum. Now again, we need to think how the digits should be placed, and all digits are to be used. So again, A and D being the leftmost digits, one will occupy 6 and other will occupy 5. Now, whatever process we followed here, I am going to make it even easier for you. You just need to place next digit. आप next digit को उस number के साथ place करोगे which is smaller. So 6 and 5 when compared, 5 is a smaller number. So you will put 4 with 5. Now when it comes to placing 3, you have two numbers 6 and 54. 3 should be placed with smaller of the two, which is 6. So now it becomes 63 and 54. 2 should be placed with again next smaller number, which is 54. So it becomes 542. And now we have no option but to put 1 here only. So in this case, the product will be maximum when the two numbers are 631 and 542. Please check it out, guys. I hope it is clear. So this is how the concept is built. All right. Good evening, Shreya. Good evening. So even this question has appeared in exams. Right. So this question has appeared in exam. All right. So please keep in mind how to develop the concept. If they introduce this question in any year, they can come up with such a concept in any other year as well. Right. So they will always try to move a step, a notch ahead, and we should be very clear about what all comes in exam. Okay, so let's move on. So another question that came in exam was 1021 raised to power 248 plus 1 written certain times when divided by 4, what is the remainder? A very, very, very easy question. So we just need to know the divisibility rule of 4. The divisibility rule of 4 says just divide last two digits of the given number. So here last two digits are 21. 21 divided by 4 is 1. Right? So 1 raised to power anything will give me a remainder of 1 only. So how many ones are written here does not matter at all. Do not count the number of ones. We just need to focus on the last two digits, which are 11. 11 divided by 4, remainder is 3, and 1 plus 3 adds up to 4, which when further divided by 4 gives me a final remainder of 0. So guys, this is actual CAT question. All right, I have just changed the values a bit so that no one can claim that I have copied their content. All right, so on the very same lines, the question was there. And divisor was only 4. So ones were there. I have just changed the figure 1021. I hope it is clear. Right. Okay, so another question that came in CAT was find the unit digit of the sum 1 plus 2 plus 3 shown up to 99. In order to find unit digit of the sum, we just need to use the formula of summation. Sigma n is n into n plus 1 divided by 2. And here it comes out to be 99 into 100 divided by 2. So when you cancel out 2 with 50 here, anything multiplied with the number ending in 0 always ends in 0. So units place of the given sum comes out to be 0. So guys, please check it out. I hope it is clear. Shreya, is it done? Gaurav?
So another question that came was find the unit digit of 1 square plus 2 square plus 3 square so on up to 99 square. In order to find unit digit of the sum, we are required the formula of sigma n square, which is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So here n is 99 into 100 into 99 into 2, 198 plus 1 is 199 divided by 6. So 2 get cancelled out here and 3 get cancelled out here. So when we multiply these three numbers, because this is ending in 0, units place has to be 0. So in this case again, unit digit comes out to be 0. So please keep in mind, they came across with this question wherein we were required summation n, this question wherein we are required summation n square. So we must know this formula as well, because if they can come across previous two questions, this can be there in any exam. So in order to find sum of this, we are required summation n cube, which is nothing but summation n whole square. So many a times questions comes directly based on formula only. So it becomes 99 into 100 whole square by 2. Right? So when you cancel out 2 here, so anything multiplied with the number ending in 0 will end in 0. Raised to power 2, still it will be ending in 0. So unit digit of this number comes out to be 0 again. So this question and the previous question I discussed both came in CAT. Right? So this is the next thing which we must go through simultaneously, because this can be the next question that appears. हर्षवर्धन अब तो रुक ही जाओ यार, अब इस मोमेंट पे मैं क्या बोलूं, अभी तो रिजल्ट आने ही वाला है, कर लो वेट यार थोड़ा सा. एंड दैट इज ओवरऑल स्कोर जो मैटर करेगा, एक सेक्शन का स्कोर थोड़ा ना मैटर करेगा यार. Isn't it, Harsh? Okay, so let's move on. So another question that came in CAT, and students keep on asking a lot of variety of questions on the same. So the question was 7 raised to power 2008, and we were required to find last two digits of this number. Although I have explained the concept of last two digits in very easy way, but we need to understand why only this question was asked. Why it was not 2 raised to power 2008 or 3 raised to power 2008 or any other number. Why this question was asked in the paper. So CAT basically has many questions in exam wherein we just need to study the pattern of value given to me. No issues, Manoj, no issues. Good evening, good evening. Right? So many questions in CAT can be solved with the help of pattern, and we are not required any concept to answer it always. So like in this case, if I observe different powers of 7, it will give me the answer very quickly. 7 raised to power 1 is 7, 7 square is 49, 7 cube is 343, 7 raised to power 4 is 2401, 7 raised to power 5 if I talk about now. So it is ending in 07, it is ending in 49, it is ending in 43, it is ending in 01. In order to find last two digits of the number, my product should focus only and only on last two digits and not entire value. So we will not keep this 3 or 24 in focus. So just multiply the last two digits of previous number with 7 to get last two digits of 7 raised to power 5. So 7 into 01 will be ending in 07. Likewise, when you study 7 raised to power 6, 7 into 7 is 49. So this number must be ending in 49. And if we observe, the very same set of values started repeated. And we need not multiply further, right? So we can say after
a cycle of 4, the values are going to repeat. 7 raised to power 7, 7 raised to power 8. Again, the very same set of values will repeat. Because here the cycle is of 4, we just need to observe where my power will fall among these 4 values. Here the power is of the form 4k plus 1. Here the power is of the form 4k plus 2. It is of the form 4k plus 3. And here the power is of the form 4k. And if I observe my power here, it is a multiple of 4. It means the number will be ending in 0, 1. So the last 2 digits comes out to be 0, 1. So guys, you will be surprised to know that this question appeared in CAT 2 times. The very same question. Right? So please keep in mind that they never came up with any other value. They came up with the very same number again to check whether students can still answer it or not. Right? So I will not suggest you to waste a lot of your time. Tushar, just give me a minute. So one should not waste a lot of time on questions like if I say that you know the concept of finding last 2 digits and now tell me what will be the last 2 digits of this number raised to power 893456 raised to power 4312. Such a value will never appear in CAT. Right? So usually student come and ask me, sir, if this question appeared in CAT, what if something else will come? We all need to understand majority of the students are not in a position to answer this question, which is very easy. Right? Why they will post such a question which not all students can solve. And it requires a lot of concept, a lot of theory to understand how to find last 2 digits. CAT authorities expect you to solve this question like this only. Observe the pattern and answer the question. That's it. Right? जो CAT में कभी आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं, उसके लिए प्लीज प्रिपरेशन मत करो. जो स्टूडेंट मैथ से डरते हैं उसका रीजन क्या है? व्हेन दे कम अक्रॉस सच अ क्वेश्चंस ऑन द वेब, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे क्वेश्चंस के साथ. एंड द चैलेंजेस, ये कभी आना नहीं है एग्जाम में और इसे देख के बच्चे डरते रहते हैं, which does not make any sense. Likewise, when I talked about finding last 2 digits of these numbers, it's a very easy thing. You just need to memorize these kind of formulas which are not only required in finding unit digit but in many places. Right? So when it comes to remainders, आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं रिमाइंडर्स के, they all are very easy, but students क्या करते हैं? They start solving questions like this. When divided by some number, what will be the remainder? Right? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. We need to draw a line and we need to understand what all will come in CAT and what all can come in CAT. So till the time we are not sure about CAT में क्या आता है या CAT में क्या आएगा, प्रिपरेशन का तो कोई मजा ही नहीं होगा ना यार, कोई फायदा ही नहीं है. हम इधर उधर से कुछ भी उठा के सॉल्व करना शुरू कर दे. I am getting a lot of queries from students that what study material we should follow. And my answer is always the same. Please solve previous year papers only to understand what in actual comes in exam. You will be surprised to know that a question appeared in CAT which was x square minus 5x plus 6 equal to 0. Find the roots of this equation. अब स्टूडेंट मेरे को आगे बोलता है सर इतना इजी क्वेश्चन है, ये थोड़े ना पेपर में आएगा, अब बताओ उसमें मैं क्या करूं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन कैट एंड वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट, बट हम डरते किससे हैं? अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ये तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इससे डरते रहते हैं. क्यों इसके बारे में सोचते हो जब पता है पेपर में क्वेश्चन ऐसे इजी इजी आते हैं तो. राइट? डू नॉट लुक एट unnecessarily bigger values.
It is a very common thought process of a lot of students. अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा? Please stop thinking on the lines which will never ever come in CAT. And that is one particular factor that drives fear in the students. हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इस डर को भगाओ, बट वो मानते ही नहीं. जो मान जाते हैं, they score 99 plus in CAT. And the students who are not able to score well, this is one of the biggest reason. डर कि अगर ऐसा आ गया तो प्लीज कीप इन माइंड नहीं आएगा. These are the only things which will appear in CAT. So middle term break किया, -2x minus 3x plus 6 equal to 0. x कॉमन निकाला यहां से into x minus 2, -3 कॉमन निकाला यहां से into x minus 2 equal 0. So x minus 2 कॉमन आया दोनों में से into x minus 3 equal 0. x equal 2, 3 are the two roots. और बचपन से करते आ रहे हो ये. And this is something we did in our school life. और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. Right? So they will just twist the information given to you. Right? कभी ये क्वेश्चन डाल देंगे, कभी थोड़ा सा घुमा के इसी चीज को पूछ लेंगे. Right? So if you are being asked what will be the minimum value of y equal to x square minus 5x plus 6. Students start differentiating it. Students start fighting for it. Please keep in mind, differentiation is never required. When you see the concept of maximum and minimum value, we are not required differentiation. एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा होता है, उसके साथ कोई मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट बैठा है जिसने डिफरेंशिएशन अप्लाई करके आंसर दे दिया, तो हम डर जाए, डज नॉट मेक एनी सेंस. Right? Differentiation is not the only way to answer it, although it can be answered by differentiation also. And students who are quite good with maths, they prefer using differentiation, but it is not required. That is something we all need to understand. In our school days हमें स्क्वायर कंप्लीट करना सिखाया गया था. Completing the square, that concept is more than sufficient to answer this question, and not only this, many more questions. Right? Many places wherein the concept of differentiation becomes difficult to apply. This basic concept helps us a lot. Right? So in order to answer this question, we just need to complete the square. अब square कैसे complete करते थे? अगर याद है तो it's good. Otherwise, let me tell you, we used to add half the coefficient of x का square. So half of -5 will be -5 by 2. We will add this value and subtract this value. So this is effectively 25 by 4, which we need to add, and 25 by 4 we need to subtract. So now this can be rewritten as x minus 5 by 2 whole square, and here 4 is the LCM, 4 6 are 24, minus 25 gives me -1 by 4. Now this is a very very important equation we all need to understand. The moment I got this situation and I am required minimum value of y, so here we got a perfect square. A perfect square cannot be negative. Its minimum value is 0. Which means a perfect square is always greater than equal to 0. Right? So this being a negative quantity, if I will add any positive quantity to it, so the value keeps on increasing and increasing and increasing. If you want to minimize the value of y, so this value in the square must be equal to 0.
So can I say at x equal to 5 by 2 it becomes 0, right? At x equal to 5 by 2 it becomes 0, and the minimum value of y comes out to be minus 1 by 4. All right, so this is what we have learnt in school. Now the very same thing can be generalized as well. It is not I am saying that we should stick to the very same method of solving. It can be generalized as well. So for any given parabola, so ये भी हमने स्कूल में किया था. For any given parabola, it can be upward or it can be downward. If the coefficient of, so let me write y equal to ax square plus bx plus c. So if the coefficient of x square is positive, it will be upward parabola. If it is negative, it will be downward parabola. So in case of upward parabola, आपसे पूछा जाएगा what is the minimum value of the parabola. In case of downward parabola, आपसे पूछा जाएगा what can be the maximum value of parabola. For any given expression, right? So your maximum and minimum value, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस डी अपॉन 4a at x equal to minus b upon 2a. I will not get into theory right now. I'm just showing you that if you can memorize this information, your job becomes even easier, right? But in this case, you need not memorize any formula. You just need to follow a process to find your answer. I hope the message is clear to each and every student. How and why things are different. इम्तियाज जेड का आंसर की हमने रिलीज नहीं करना है यार, जेड अथॉरिटीज ने करना है. सो वी हैव टू वेट. गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग. वी हैव टू वेट इम्तियाज, सो प्लीज बी पेशेंट. प्रिया, मनोज, श्रेया, गौरव, क्लियर है सभी को? एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर ऑन ऐप, ये पार्ट क्लियर है सभी को? Okay, so let's move on to another question. So like one of the question that I came across was y equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3. And in this case, we were required to find the minimum value of y This was one question that we came across. Second question was minimum value of y, like if I shall write it like this: if y is minimum, then find the value of x. There are two very common questions that appear in exams. In one or the other exams, आ ही जाता है कुछ ना कुछ. So in order to find the minimum value of y, or if the y is minimum, then find the value of x. Please always keep in mind, if there are few values in modulus and here the sign is of plus, you just need to equate all the three to 0 और x की values निकाल लो. These values of x are called turning points. Right? So it gives me three values of x as 1, 2 and 3. Just write all the values in increasing order. If the number of values are odd, then the minimum value is always at the middle value. So the answer for question number 2 will be x equal to 2. I will be getting the minimum value of the expression. And in order to find the minimum value of y, just put x equal to 2 here. So it becomes 2 minus 1, which is 1, plus 2 minus 2 is 0, plus 2 minus 3 is modulus minus 1, which is again 1. So 1 plus 0 plus 1 adds up to 2. So the minimum value of y comes out to be 2. Is it done, guys?
राइट, राइट। सो इफ यू थिंक कि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज कीप इन माइंड ऐसी वैल्यूज कभी नहीं आती कैट में, कभी नहीं आती, आएंगी ही नहीं, आज से 10 साल बाद भी नहीं आएंगी, because they do not want you to use any mathematical formulas to answer these kind of basic questions. Although we did it with a very like easy and basic concept, but still if you use the mathematical way of solving it, still it is not difficult, right? बट हम कभी भी ऐसे विचार नहीं लेके आएंगे कि अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, कभी नहीं आने वाला ऐसा कुछ भी, बहुत इजी पेपर आता है, राइट? Then we also come across many questions which are based out of arithmetic, right? And questions which are based on percentages, profit loss discount. And this year again, many questions appeared from these chapters. And we all need to understand कि सभी को परसेंटेज कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैलकुलेशन आना चाहिए, राइट? देन सभी स्टूडेंट्स को रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, राइट? सो एंड सो फॉर. सो इफ वी आर कंफर्टेबल विद ऑल दीज, तो अपने आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाओगे तो आंसर निकलते रहेंगे. Objective of today's session is, as I discussed in the previous two sessions also, that practice is required, right? That is very much required. बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है? अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस आपका कब मैं बोलता हूं कि परफेक्ट है, when if I solve a question, let's say a plus b plus c equals 6, एंड मैंने आपसे पूछा what is the maximum value of product of A, B and C. So how quickly you can answer it, that is the most important part. How quickly you can recognize, हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये ऐसे होगा, और खटक से आंसर दे दिया. On the other side, I will say I came across a question जो मैंने कभी देखा ही नहीं, राइट? मैंने कभी सॉल्व भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा. नाउ आई विल टॉक अबाउट क्या मेरे में एबिलिटी है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं. नाउ आई एम थ्रोइंग दिस क्वेश्चन अहेड ऑफ यू, प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. a plus b plus c equal to 6, you have to find maximum value of product of a, b and c. So I am waiting for your response. Please be quick, everyone be quick. All the students who are on YouTube or on Gradeup app, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा. Come on guys, be quick. Shaurya, Sareen, we both are Sareens. Shaurya, socho, this is not the correct answer. No Raghav, this is not the correct answer. This is one of the most obvious answer, but not correct. Think over it.
मनोज, केदार, प्रिया, श्रेया, गौरव, टेल मी क्या आंसर होगा? सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइव ऑन यूट्यूब प्लीज बी क्विक। नो रोशनी, नो। नो। इम्तियाज, तुषार, हर्ष, सुजय, अखिल, कुछ तो आंसर लिखो यार। क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया। नो निधि, नो। नो नवनिधि। चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग सच अ क्वेश्चन, कुछ एक परसेप्शंस रहती हैं दिमाग में। व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज वैल्यू, आप कोशिश क्या कर रहे हो? हाँ रोशनी। नॉट वेरियस आंसर्स, राइट, बट यस इनफाइनाइट। सो सबसे पहला चीज क्या आता है जब हम मैक्सिमम देखते हैं ना, हमें ये होता है कि आंसर को पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 2 2 2 ले लिया और हमने प्रोडक्ट मार्क कर दिया 8, विच इज द मोस्ट कॉमन आंसर। एंड ये डेफिनेटली आपका एक आंसर ऑप्शन होगा ही होगा। एंड along with most common, it is most obvious also, क्योंकि स्टूडेंट पॉजिटिव बनाने के चक्कर में सोचता ही नहीं है कि पॉजिटिव बनेगा कैसे प्रोडक्ट। नाउ आई विल इन्वॉल्व रीजनिंग इन दिस, राइट। सो एक चीज क्या है, एक मेरे पास क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट विच आई से आर फॉर्मूला बेस्ड, राइट। हमने कुछ एक फॉर्मूले पढ़े, उसके ऊपर बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए। सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं, दे इन्वॉल्व अ बिट ऑफ रीजनिंग, जिसे हम लॉजिक भी कहते हैं। सो आई हैव प्लान्ड a lot of sessions on reasoning or logic based questions that appear in exams. So it is the same। इन तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो, बहुत अच्छा विचार है। तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब या तो तीनों आपके पॉजिटिव हो, या दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए। आप सभी ने इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अमन ने सोचा। इफ a plus b plus c is 6, सोचो बाउंड्रीज के बियॉन्ड, राइट। इस केस को लेके चलो, इफ इट इज -50 एंड यू कीप इट 106, योर सम इज टेकन केयर ऑफ एंड द प्रोडक्ट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर। इसे जितना बड़ा करते जाओगे उतना ही बड़ा होता जाएगा ना यार, राइट। सो कैन आई से इन दिस केस आंसर विल बी इंफिनिटी, विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। बट जब मैंने ये एक्सप्लेन किया तो सबको ये लगा कि मैं भी ये कर सकता था, राइट। सो आई एम राइटिंग इट इन हिंदी, कर सकता था। सो वेन एवर यू कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आप उसे आंसर किए, बट आपने सारी पॉसिबिलिटीज ध्यान में नहीं रखी, राइट, एंड यू गॉट रॉन्ग आंसर। जो ये कर सकता था वाला कंडीशन है, इट शोज दैट इन क्वेश्चंस को मैं एक अलग से जगह पे रखूं। सो वी नीड टू मेक अ नोटबुक which is very 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 important। so in my days when I started teaching, right, मैंने कभी कहीं से कोचिंग नहीं लिया, कुछ नहीं किया। by God's grace, my dad is a maths teacher and शुरू से ही मैथ्स अपना ठीक था, राइट। सो मेरी शुरू से एक हैबिट रही, वेन एवर आई केम अक्रॉस न्यू क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, राइट, जिसमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा हो सॉल्व करने में इफेक्टिवली,
जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऑब्वियसली टाइम लगता था। सो अभी आजकल आप सभी के पास बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं, मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बट एक मीडियम जो सभी के पास है बट उसे यूज नहीं करता, दैट इज नोट्स बनाना। और नोट्स को राइट वे में बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को जो भी दिखता था, आज तक मेरे पास मेरी सारी नोटबुक्स पड़ी है, राइट। एंड माय पेरेंट्स ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग मी कि तुम इतना कूड़ा क्यों इकट्ठा करते रहते हो। सो मैं उन्हें यही समझाता हूं कि ये मैं कर चुका हूं, बट आई नो मेरे को अगर 10 साल 20 साल बाद दोबारा इन्हें करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं से नहीं मिलेगा, मेरे को इन्हीं बुक्स को दोबारा से उठाना पड़ेगा, राइट। सो वी कीप ऑन लर्निंग, और चीजें भूलते जाते हैं। आज से 20 साल पहले जो किया, आज नहीं याद। बहुत से क्वेश्चंस जो मेरे ही बनाए हुए हैं, दे अपीयर इन कैट, राइट। सो अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। लोग मेरे को बोलते थे कि तुम ये सब कुछ क्यों पढ़ाते हो, बट आज की डेट में दे ऑल नो, यस, यही चीजें एग्जाम में आती हैं। कुछ भी अननेसेसरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टिक टू बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक। अब इसमें आपके साथ खेला क्या गया? खेला ये गया कि आपको नहीं दे रखा था एबीसी आर पॉजिटिव, बट आप सभी ने अज्यूम कर लिया एबीसी आर पॉजिटिव, राइट। यहां लिख नहीं रखा कि एबीसी क्या है। सो जब कुछ नहीं लिख रखा, इट मींस दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स की नोटबुक बनाओगे, राइट, तो जब आपको रिवाइज करना है, फोकस ऑन दीज थिंग्स ओनली। एंड वी ऑल्सो नीड टू एंश्योर कि इन फ्यूचर इफ वी कम अक्रॉस सम क्वेश्चन लाइक दिस, उसमें मिस्टेक ना हो, राइट। नोटबुक बनाना जरूरी है, बट वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन क्या सिमिलर लाइन के क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहा हूं मैं अगेन एंड अगेन। तो जब आपने नोटबुक में ऐसे 1 2 3 4 करके 10 20 50 क्वेश्चंस लिख लिए, तो इनको रिवाइज करो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि इन क्वेश्चंस पे कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दीज आर द ओनली फोकस एरियाज। बाकी जो ठीक हो जाता है वो हमेशा ही आप ठीक करोगे, बट जिनमें गड़बड़ होती है, उनमें गड़बड़ दोबारा ना हो, दैट इज रिक्वायर्ड। गुड अमन, गुड। गुड। हाँ जी अर्पण, गिव मी अ सेक गाइस, मैं अर्पण का क्वेश्चन आंसर कर दूं। अर्पण, you got 99.71 percentile overall and you got क्वांट में 98.93। कौन सा स्लॉट था अर्पण? बहुत बढ़िया स्कोर है तुम्हारा। स्लॉट कौन सा था? 1 2 और 3? आई थिंक तुम्हारा 3 था जितना मेरे को याद है शायद। और अगर 3 था तो तुम्हारा स्केल डाउन हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट ईयर कौन सा स्लॉट मिलता है जिसमें स्केल अप होता है या डाउन, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाय आयुष, हेलो। अर्पण कौन सा स्लॉट था? सो मैं तुषार का भी क्वेरी आंसर कर दूं। तुषार, हो तुम अभी ऑनलाइन? तुषार, आर यू ऑनलाइन? टाइप यस इफ यू आर। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सेशंस इज ओनली एंड ओनली टू मेक यू रियलाइज कि कितना इजी पेपर आता है और हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, एंड फाइनली हम उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल कीप टेकिंग, राइट राइट तुषार, गुड गुड। सो Tushar's query is, if someone is weak in quants, so from where would he start his preparation? So from which topic? So last class मेरा इसी चीज के ऊपर था. So I would love to ask each one of you today again, what were your marks
इन 10th क्लास इन मैथ्स? सभी जल्दी से आंसर बताओ। 10th क्लास में जो आपके मार्क्स थे मैथ्स में, वो बताओ क्या थे? जल्दी से बताओ, सभी को बहुत मजा आने वाला है। इफ यू हैव मिस्ड माय लास्ट क्लास, जल्दी से बताओ। तुषार, अमन, अर्पण, एवरीवन बी क्विक। रोशनी, शौर्य, इम्तियाज, सभी बताओ 10th के मार्क्स। अगर एग्जैक्टली याद नहीं है, अप्रोक्सीमेट बता सकते हो। बहुत बढ़िया। संकल्प के थे 33 आउट ऑफ 100। राइट संकल्प, राइट। आयुष, तुम्हारे कितने थे? केदार, राघव, सभी बताओ। श्रेया, मनोज, प्रिया, 10th के मार्क्स बताओ। समिता गॉट 45, बहुत बढ़िया। So let me write few marks here. One student got 33, one got 45. केदार, ज्योमेट्री को छोड़ना अभी यार। नो इश्यूज नवनिधि, तुम 8th के मार्क्स बता दो। राइट, 8th में तो 10th सभी के पास, मैथ सभी के पास था 8th में। तुम 8th के मैथ्स के मार्क्स बता दो, वो भी चलेंगे। ओके, सो अमन गॉट 85, तुषार गॉट 9 जीपी। राइट। Yes, Dharmender, yes, you are very much eligible. So your eligibility criteria depends on your marks, not the year in which you are studying. You can always start preparing for CAT. Right, Dharmender? So I request all the students who have still not joined our Gradeup official Telegram group, please join it. Dharmender, I think you are not there. So ऊपर अभी लिंक पिंड है, ऊपर पिन कर रखा है लिंक को, just click it and join. So we will keep responding to all your queries whenever you feel like. Okay, so Navnidhi got 96 and 8. So अभी अभी जस्ट गिव मी अ सेक, मैं सभी का देख लो। संकल्प छोड़ यार मैथ्स को, तू अभी देखता जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केदार के 64। अच्छा, अब ये देखो सभी स्टूडेंट, दे आर द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स। कुछ एक जिन्होंने शेयर किए, बाकी कुछ एक शायद हेजिटेट कर रहे होंगे, याद नहीं होगा। So CAT paper is of 300 marks, right? If you get 210 marks overall, you get 100 percentile, right? If you get somewhere around 100, let's say 50 marks, you get still you get somewhere around 98, 99 percentile. At around 105, 110 marks, you get 90 plus percentile. अगर हम परसेंटेज कैलकुलेशन करें, सो दे आर 70% ऑफ मार्क्स एंड दे आर ओनली एंड ओनली like 35% of marks. So the one who got 33% marks in class 10th, right, which means somewhere around 99 marks, अभी भी तुम 90 percentile पे तो आ ही जाओगे if you still score 33% marks. But still, why students are not able to score only 35% of marks? The reason is fear. I have counseled many students and parents on only and only one factor, that is fear. थोड़ा डर होना is fine, but जब ये डर बहुत ज्यादा हो जाता है, then problematic situation में आ जाता है। इस डर को बढ़ने मत दो ना यार। मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूं आप सबको, ठीक है? ऑल्दो मेरे मैथ्स के मार्क्स वर ऑलवेज गुड, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है? We will not get into that. I belong to a city called Gurdaspur. I did my schooling from a school which is not convent education.
एजुकेशन, गोल्डन पब्लिक स्कूल गुरदासपुर, बहुत बड़ा स्कूल है बट इट इज नॉट कॉन्वेंट, इट इज नॉट affiliated to either ICSE or CBSE, it is affiliated to Punjab School Education Board. Then I did my 11th and 12th from Government College Gurdaspur. So in our days जो 11th 12th था वो कॉलेजेस में होता था, बट अभी दे आर इन स्कूल्स ओनली. 11 and 12 वहां से किया PSCB. Then I did my BTech from Punjab Technical University. If you check my schooling or entire education, it is not from top 10, top 20, top 100, top 1000 institutions of the country, but still I score 100 percentile. मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं लिया, स्टिल आई स्कोर 100 परसेंटाइल. राइट, टाइम लगा इस लेवल को अटेन करने में क्योंकि खुद लगे हुए थे पूरा प्रोसेस समझने समझाने. राइट, सो इट्स बीन अराउंड 17 years ऑफ टीचिंग. राइट, एक ही चीज जो कभी नहीं थी मेरे में, दैट वाज द फियर. कभी डर नहीं लगा. एंड आज की डेट में ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करते एंड ये डर सबसे पहले आता है. फर्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या मेरे से हो जाएगा? यार ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर पूछो कि अगर आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा और अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा क्या? आंसर इज अ बिग नो. नहीं पढ़ोगे नहीं होगा. बट ऑन द अदर साइड मार्केट में बुक्स ऐसी ऐसी आ रखी है, पूरा इंटरनेट वेब स्पेस ऐसा भर रखा है कंटेंट के साथ, बच्चों को समझ नहीं आता शुरू कहां से करूं. जो तुषार का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. और इसी को मैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन आंसर कर रहा हूं. In one or the other session, in multiple ways I try to answer it. Alright, पहला चीज जो सभी को रिक्वायर्ड है, that is पेपर में क्या आएगा, which means but all topics will come in CAT. or any other MBA entrance exam, सभी में सेम है, सभी में. और यही जो टॉपिक्स है जो कैट में आ रहे हैं, यू कैन ईदर गो फॉर बैंक पीओ, एसएससी, सब जगह ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, बस चीजों को कर देते हैं, घुमा देते हैं. मोर लेस इट इज सेम. बैंक पीओ में, एसएससी में आपका जीके अलग से आ जाएगा. कैट में जीके नहीं आता, बट इन अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स आपका जीके इज ऑल्सो देयर. राइट, सो जीके कैट में नहीं आता है और एग्जाम्स में है. बैंक पीओ एसएससी में तो आता ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टॉपिक्स. मैं बार बार हर क्लास में वो लिस्ट देता रहता हूं स्टूडेंट्स को. वंस यू नो द टॉपिक्स, देन चूज एनी टॉपिक टू स्टार्ट फ्रॉम. यार क्यों पूछते हो कहां से शुरू करें? चूज एनी टॉपिक टू स्टार्ट फ्रॉम. राइट, व्हाई आई एम सेइंग एनी टॉपिक? द रीजन इज चूज अ फेवरेबल टॉपिक जो तुम लोगों को लगता है कि मैंने पहले पढ़ रखा है एंड आई एम कंफर्टेबल विद द टॉपिक. इससे होगा क्या? इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा. कम से कम उन टॉपिक्स को अपना स्ट्रेंथ बनाओ कि इस चैप्टर में से तो कुछ भी आ जाए, मैं ये तो क्वेश्चन हमेशा करूंगा ही करूंगा. ये कॉन्फिडेंस सभी स्टूडेंट्स में होना चाहिए. एंड इट इज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर. ये नहीं कि मैं पढ़ता जा रहा हूं और मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. अरे कॉन्फिडेंस कहां से आएगा ना यार, क्योंकि मैंने उस एक टॉपिक को पूरा टाइम नहीं दिया. जितना टाइम चाहिए था उसकी प्रिपरेशन के लिए, एक दिन पढ़ा और मेरे को लगा हो गया. ऑब्वियसली नहीं हुआ. एवरी टॉपिक रिक्वायर्स टाइम.
100-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते रहो जब तक तुम्हारा हाथ मलाई की तरह नहीं चलता, मक्खन की तरह नहीं चलता। करते रहो सॉल्व उन्हीं क्वेश्चंस को। ये मत लेके चलो मैंने 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन करने हैं हर टॉपिक के, किसी की औकात नहीं है। रीजन इज टाइम ही नहीं है। 10 साल बाद थोड़े ना कैट क्लियर करेंगे, राइट? So students who run after thousands of questions, practically that is not possible. As like in the previous session, I have given a target of around 3000 questions. उतना कर लो, बहुत है यार। बच्चे उतना नहीं करते, राइट? तुम 10,000 क्वेश्चन करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कुछ याद नहीं होगा, फायदा ही नहीं है करने का, राइट? So it is very important for all of us to understand that we need to choose a topic जो फेवरेबल है, कंफर्ट जोन में है, और उसे स्ट्रेंथ बनाना है मेरे को, right? And once these two things are taken care of, success will be yours. No rocket science. Now there is another thing which we can add. One is, क्या हम कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या नहीं? अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं तो वहां पर जो भी क्लास में टॉपिक चल रहा है सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करो। दिस शुड बी माय फोकस एरिया। अगर स्ट्रक्चर्ड कोचिंग नहीं है, आज कोई क्लास हो गया, कल कुछ पढ़ा दिया, परसों कुछ पढ़ा दिया, देन तो इट डजंट मेक एनी सेंस ऐसा कोचिंग करने का। आप जिस बैच में हो उस बैच को फॉलो करो। ये नहीं कि आप मल्टीपल 4 बैचेस को फॉलो कर रहे हो और आप हैफाजर्डली सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इवन मोर कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, राइट? और तब आप ऐसे सिचुएशन में होगे जब इन एक्चुअल कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो यू नीड टू फॉलो एनी वन बैच जिस भी कोचिंग पे आप जा रहे हो, राइट? और जो भी क्लास में टॉपिक होना है, क्लास में जाने से पहले प्री क्लास वर्क करके जाओ। सो प्री क्लास वर्क बने से जो भी टॉपिक का क्लास है उसका थ्योरी पढ़ के जाओ, राइट? अगर उसके साथ कोई वीडियोस हैं वो वीडियोस देख के जाओ। अगर कुछ एक प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उन्हें आप देख के जाओ। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपको पता है कि मेरे को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। एंड व्हेन यू अटेंड द लाइव क्लास, उस लाइव क्लास में ये चीज समझो कि जो मेरा इशू था, जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न था, क्या वो एरिया ऑफ कंसर्न इस क्लास में एड्रेस हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो प्लीज आस्क योर टीचर कि मेरे को इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू प्लीज एलेबोरेट दैट पर्टिकुलर पार्ट? हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में होना हो, या हो सकता है उस टीचर ने सोचा हो ये तो सबको आता ही होगा बट सिर्फ आप ही को नहीं आता, इसलिए उसने नहीं करवाया वो टॉपिक, राइट? सो लाइक आई ऑलवेज कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो बी एट ग्रेडअप फोकस ऑन, कोई भी टॉपिक ना छूटे, छोटे से छोटी चीज को टच किया जाता है, बट व्हेन यू आर एट सम अदर प्लेस आई कांट गारंटी इट, राइट? सो अगर आप लाइव क्लास में हो, ये चीज देखो कि क्या मेरी क्वेरी एड्रेस हुई है या नहीं। अगर हो गई है, वेल एंड गुड, मजे मजे है फिर तो। नाउ दैट आई विल से दैट लर्निंग हैज टेकन प्लेस इन दिस लाइव क्लास, राइट? मेरी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो गई, दैट्स इट। देन व्हेन यू कम बैक पोस्ट क्लास, it is very important for each one of us, immediately after the class we must go through a quiz or a practice exercise which is of unsolved question, right? So here I have mentioned practice examples which are solved. Here I am saying practice exercise or quiz which is not solved, जो आपको solve करना है अपने हाथों से। सो आपने पहले थ्योरी पढ़ा, क्लास में थ्योरी हुआ, एग्जाम्पल्स हुए, लर्निंग टुक प्लेस। नाउ वी नीड टू चेक क्या मैं इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाता हूं या नहीं। नाउ अगेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज आप सारे क्वेश्चन कर पाए, इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज
that maybe in this much of time frame आप जो सीखे शायद आप भूल भी गए, और आपको ये चीज कभी रियलाइज ही नहीं हुई कि आप इतनी जल्दी चीजों को भूल भी जाते हो, राइट? विच मीन्स आई हैव टू गो बैक टू प्री क्लास वर्क, देन जो आपका लाइव क्लास था उसका रिकॉर्डिंग दोबारा से देखो, राइट? अगेन रिकॉर्डेड क्लास देखो और दोबारा क्विज को अटेम्प्ट करो, और ये तब तक करो जब तक क्विज के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो जाते। नाउ दिस इज द साइकिल ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी शुड प्रिपेयर, कि कहीं पर कोई भी गैप रहे ही ना, राइट? So that ways it's not fear of maths only, it is fear of any subject that will go away. So I hope I have answered to the queries of almost all the students, right? But still, if you guys have any query, any doubt, do let me know. Sankalp, I am sharing the link here, so please join through this link. And धर्मेंद्र, लिंक ऊपर पिन कर रखा है यार, देख लो जरा। सो अगर किसी और स्टूडेंट को कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू फेयर वाला, सो डू लेट मी नो। कितने मार्क्स थे आपके 8th 9th 10th में? घबराना मत उस चीज को लेके, वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट? सो irrespective of your marks, focus on your preparation. 33 marks are not at all bad, they used to be bad in class 10 only. Class 10 गया, कहानी खत्म, right? So those who got 96 marks, they should be very very happy. So now I will fit then close the session, right? So we'll be coming up with many more, so they are already planned. So again, those who joined us late, उनके लिए announcement है that Gradeup has introduced installment payment scheme for all the students. So now the 12-month plan can be availed in 3 installments, and 18-month plan can be availed in 4 installments. थैंक यू मंजूषा, तुम चुप करके बैठी थी, अब बोल रही हो। सो हियर इज द टीम हु विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर कैट जर्नी. So 6 of us are 100 percentilers, all other are 99.9 plus percentilers, right? So please keep practicing topic wise quizzes, keep attending live classes. Thank you, thanks a lot guys, thank you.